दृश्यभात मुक्त हस्त दान देने वाले व्यक्ति से पदानी पग त्रीणी तीन दैत्य इंद्र हे दैत्यराज समितानी माप के बराबर पदा पाव के द्वारा मम मेरे। अनुवाद। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से माप कर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। कृपया दोहराएं। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों से माप कर केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। तात्पर्य। भगवान वामन देव अपने पैरों से नापकर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, किंतु वास्तव में वे ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों को दान में लेना चाह रहे थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया था। Om Jnana-timirandasya Jnana Shalakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Caitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Vita Padakamanam Shri Guru Radhe Namane Shri Krishna Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivedanta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, good morning. Thank you all for coming to Srimad Bhagavatam class. I pray for the blessings of all my seniors and everyone else, that maybe we may speak something that is practical and relevant in our lives. आप सबका हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और मैं यहाँ पर जितने वरिष्ठ भक्त हैं और अन्य भक्तों से आशीर्वाद की याचना करती हूँ कि हम इस पे कुछ चर्चा कर सकें जो व्यवहारिक हो और आपके जीवन से संबंधित हो। Today is the disappearance of Ishwar Puri Maharaj, the spiritual master Sri Caitanya Mahaprabhu. आज श्रील ईश्वरपुरी पाद का तिरुभाव दिवस है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। I didn't know that, so I didn't prepare anything. So I'm wondering if maybe Krishna Prabhu, would you be willing to say something in honor of Ishwar Puri Maharaj? Something. मुझे इस बात का ज्ञात नहीं था, तो माता जी प्रभु जी से, प्रभु जी से निवेदन कर रही, पूछ रही हैं कि क्या आप उनको ऑनर करने के लिए कुछ उनके विषय में बोलेंगे। I need your blessings. And you can speak in Hindi and then you can translate. तो मैंने भी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया, जो मालूम है मैं बताने का प्रयास करूँगा। ईश्वरपुरी पाद जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी के मुख्यतः ये बहुत महत्वपूर्ण शिष्य रहे। माधवेंद्रपुरी के शिष्य अद्वैताचार्य भी रहे, ईश्वरपुरी भी है। और जब माधवेंद्रपुरी अपने अंत्य लीला में थे तो ईश्वरपुरी ने बहुत उनकी मेनियल सेवा की, यहाँ तक कि उनके मलमूत्र को भी साफ करना। तो उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और हमारे परम गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर महाराज बताते हैं
जो अपने गुरु की सेवा करते हैं उनकी सेवा के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ईश्वर पुरी जी ने माधवेंद्र पुरी जी बात की अपने गुरु की ऐसी विज्ञान सेवा की, तो स्वयं भगवान उनके शिष्य के रूप में आए चैतन्य महाप्रभु के। और ईश्वर पुरी बात जी को चैतन्य महाप्रभु पहली बार मिले गया में, जब वो जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध करने गए थे। और वहीं से अपनी लीला में पहले वो निमाई पंडित थे जो कि बहुत ही उद्दंड बालक थे, और सारे के सारे नवद्वीपवासी भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये इतना मेधावी छात्र है, इतना बुद्धिमान है, अगर ये वैष्णव बन जाएगा तो क्या होगा। तो वो प्रार्थना करते थे, उसको आशीर्वाद देते थे कि आप वैष्णव बनो। लेकिन निमाई पंडित सबको बहुत तंग करते थे अपनी लीला में। तो जब वहाँ मिले ईश्वरपुरी पाद जी से, तो पूरे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और तब से निमाई ने अपने जो जिस भाव का आस्वादन करने और जिस भाव को बांटने आए थे वो उन्होंने प्रदर्शित किया, और हमेशा विरह में रहते थे। और उसके बाद जब वो वापस आए नवद्वीप में, तो सारे नवद्वीपवासी श्रीवास ठाकुर इत्यादि तो बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ अभी बिल्कुल वैष्णव बन गए हैं। लेकिन सच्ची माता बहुत परेशान हो गई कि मेरे निमाई को क्या हो गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले भी ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप में आए थे, शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में आए। तो अद्वैताचार्य जी पहचान गए कि ये बहुत बड़े सन्यासी हैं और उनके गुरु भाई हैं। और ईश्वरपुरी पाद जी ने एक ग्रंथ लिखा था, इसका नाम था कृष्ण संहिता, कृष्ण संहिता थी शायद, और में कृष्ण चरिता। तो उन्होंने उनको जानते थे श्री कृष्ण चरिता, तो वो जानते थे कि निमाई बहुत बड़े पंडित हैं व्याकरण के। तो उन्होंने जान के निमाई को दिया कि आप इसमें कुछ इसको एडिटिंग करके दो। और निमाई ने बोला नहीं, मेरे इसमें कोई इतनी योग्यता नहीं है। लेकिन निवेदन करने पर निमाई ने लिया, और निमाई ने उसमें से कुछ त्रुटि भी निकाल के दी। तो फिर ईश्वरपुरी पाद ने बोला ये त्रुटि स्वीकार नहीं की, वो त्रुटि वास्तव में त्रुटि नहीं थी। तो ये पास्ट टाइम है, और त्रुटि स्वीकार नहीं किया था वास्तव में, उनको निमाई को हरा दिया था कि ये त्रुटि नहीं है। तो इस ढंग से चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा दे रहे हैं अपनी लीला से कि हर किसी को गुरु की आवश्यकता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ईश्वरपुरी पाद की। Thank you very much. It's nice to honor the Vaishnava saints, and it's a good thing that bhakti isn't dependent on knowledge, or I'd have no chance. But as we can see from the life of Ishvar Puri, he menially served his spiritual master. धन्यवाद। ईश्वरपुरी का सम्मान करने के लिए हम वैष्णव का सम्मान करते हैं और देखते हैं कि जो भक्ति है ज्ञान पर आश्रित नहीं है। हम ईश्वरपुरी पाद के जीवन से देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। So, of course, the Vaishnava Acharyas give us so many translations of texts of Shastra. वैष्णव आचार्यों ने हमें शास्त्रों के इतने सारे अनुवाद और टीकाएं दी हैं। And this is to help us to understand Gyan, who we are. और उसका उद्देश्य है ये समझने के लिए कि हम वास्तविक में कौन हैं। In reality, and the processes by which we can reawaken to our real constitution. और हमें वो विधि देने के लिए कि जिसके माध्यम से हम अपनी जो वास्तविक स्थिति है उस पर पुनः स्थापित हो जाए। So the knowledge can help us. जो ज्ञान है हमारी सहायता करता है। And we don't want to just get stuck in the knowledge. परंतु ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान में फंस के रहना जाना चाहते हैं। Knowledge gives us a means for action. ज्ञान हमें एक माध्यम देता है कार्य करने के लिए, एक्शन के लिए। Devotional service is the action which connects us to Krishna. भक्तिमय सेवा ये ऐसा कार्य है जो हमें कृष्ण से जोड़ता है।
And through devotional service, we develop love. और भक्तिमय सेवा के माध्यम से हम प्रेम विकसित करते हैं। Love is a very, 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 very deep topic. जो प्रेम है बहुत ही बहुत ही बहुत ही गहरा विषय है। Krishna's love is expanding moment by moment. जो भगवान कृष्ण का प्रेम है उसका विस्तार हो रहा है हर क्षण। And the gopis and all the Brajabasis, their love is expanding along with that. और जो गोपीज और ब्रजवासी उनका जो प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रेम के साथ उनका प्रेम भी विस्तार हो रहा है। And we are trying to reach the shore line of bhakti. और हम प्रयास कर रहे हैं जो भक्ति का जो महासागर है उसके एटलीस्ट एक तट तक पहुंचे। We're wanting to reach the shoreline of love of God. हम जो भगवत प्रेम के इसके तट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। And then when we have sufficient understanding and sufficient knowledge, we want to Shri Krishna और जब हमारे पास पर्याप्त समझ और पर्याप्त ज्ञान होगा, we want to at least put our toe in the ocean of love of God. तब हम कम से कम अपना जो पैर है उसको जो महासागर है भगवत प्रेम का उसके अंदर रखेंगे। So Sri Caitanya, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu was a scholar. श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में एक बहुत बड़े पंडित थे। An undefeatable scholar. जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। And yet he was missing the love which he got when he met his spiritual master, Srila Maharaj. परंतु फिर भी वो उनके वो प्रेम को मिस कर रहे थे जो उन्हें प्राप्त हुआ जब वो अपने आध्यात्मिक गुरु ईश्वर पुरीपाद से मिले। So love defeats knowledge. जो प्रेम है वो ज्ञान को पराजित कर देता है। And so in our lives, as we practice devotional service, और तब अपने जीवन में जैसे हम भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं, we can continue to pray for some glimpses of what that love looks like. तो हम इस चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो प्रेम की झलक है कुछ हमें भी प्राप्त हो कि जो असली प्रेम है वो कैसा दिखता है। And not excessively worry so much about doing it right. और जरूरत से ज्यादा इस बात से चिंतित ना हो कि बिल्कुल मैं सही तरीके से कर रहा हूँ। Sometimes मैं बिल्कुल सही तरीके से करना चाहता हूँ। मैं इसी बात से चिंतित हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहता हूँ। तो ये प्रवृत्ति भी कभी कभार प्रेम विकसित के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का विषय। So we want to find ways to get from up here and into our heart where Krishna is actually residing. तो हम अपने यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर कृष्ण वास्तविक में विराजमान है। If we stay up here and neglect this part, we will shrivel up and die. Shrivel up, dry up and die. अगर हम हृदय को तिरस्कार कर दें या इसकी तरफ ध्यान ना दें तो हम सिकुड़ जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। So it's good to have a balance of both things. तो एक अच्छा संतुलन बनाना आवश्यक है। अच्छी बात है कि ऊपर दिमाग में और हृदय दोनों का संतुलन बनाना। So I'd like to talk briefly about the verse. तो मैं संक्षिप्त में इस श्लोक के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगी। The Lord begs charity from Bali Maharaj. भगवान भिक्षा मांग रहे हैं बलि महाराज से।
as we can see, the Lord comes many times in so many ways. जैसे हम देखते हैं कि भगवान आते हैं अनेकों बार अनेक अनेक रूप में. He appeared as Nishingadev, and here he's appearing as Vamanadev. नृसिंहदेव यहाँ पर वामन देव के रूप में. He's appeared as Lord Caitanya Mahaprabhu. वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. So as Vamanadev, he took a role of a small Brahmin dwarf boy. और वामन देव के रूप में उन्होंने वामन का रूप ग्रहण किया, एक छोटे छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में. Unassuming, he wasn't known for his knowledge. He was a simple Brahmin. वो एक सरल ब्राह्मण के रूप में थे, अपने ज्ञान के लिए वो जाने नहीं जाते थे. And Bali Maharaj was a great king. और बलि महाराज एक महान राजा थे. He owned much land and he had lots of opulence. उनके पास बहुत अधिक मात्रा में ऐश्वर्य था. And the Lord wanted to be merciful to Bali Maharaj. और भगवान बलि महाराज पर कृपा दिखाना चाहते थे. So he was coming to beg some charity. तो वो भिक्षा मांगने के लिए बलि महाराज के पास आए. And so he's begging in this verse, please you kindly just give me 3 steps of land. और इस श्लोक में वो भिक्षा मांग रहे हैं कि केवल मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए. और बलि महाराज अगले श्लोकों में उनसे कहेंगे कि हे ब्राह्मण, तुम इतना कम क्यों मांग रहे हो, और अधिक तुम मांग सकते हो, मैं दे सकता हूँ. तो वामन देव उनको उत्तर देंगे कि जो कम में संतुष्ट नहीं है वो ज्यादा में भी संतुष्ट नहीं होगा. So that was a good answer. That satisfied Bali Maharaj. So he agreed to give 3 steps of land. तो इस उत्तर को सुनकर बलि महाराज संतुष्ट हो गए और वे सहमत हो गए 3 पग भूमि देने के लिए. So Krishna didn't really, although in the verse it says Krishna wanted the upper, middle, and lower planetary systems, he wanted actually something more than that. हालांकि तात्पर्य में लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों को दान में लेना चाह रहे थे, परंतु वास्तविकता में भगवान इससे भी ज्यादा कुछ चाहते थे. He expanded himself so that his 2 steps covered all the planetary systems. उन्होंने अपने आप को इतना विस्तारित कर लिया कि 2 पग में ही उन्होंने सारी जमीन ग्रहण कर ली. So what is it that he wanted with his 3rd step? तो ऐसी क्या चीज थी जो अपने तीसरे कदम से वो चाहते थे प्राप्त करना? What did he want? What's that? Surrender. He wanted Bali Maharaj's heart. वो बलि महाराज का हृदय चाहते थे. Sometimes in our Krishna consciousness movement, the word surrender becomes do what you are told. कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कभी कभार सरेंडर, शरणागति का अर्थ ये लिया जाता है, वो करो जो तुम्हें बताया जाए. Right? सही. I know, I've been in this movement long enough. I know what that word surrender means. Just do what you're told. Don't give me a hard time. तो मैं जानती हूँ, मैंने पर्याप्त समय बताया है इस आंदोलन में कि ये जो सरेंडर शब्द है इसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है. And there's nothing inherently wrong with that. That kind of surrender teaches us to let go. ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ गलत है, ये हमें शिक्षा देता है लेट गो की, छोड़ दो. And deep surrender
is offering our heart. और जो अंतःकरण से जो शरणागति है वो है अपना हृदय देना. Our heart is the sitting place of Super Soul and the sitting place of Chaitya Guru and the sitting place of our soul. हृदय वो स्थान है जहाँ पर चैत्य गुरु परमात्मा विराजमान है और जहाँ पे मेरी खुद की आत्मा वहाँ पे स्थित है. So it's the sitting place of our deepest spiritual desire. तो वो ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी सबसे गहरी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वहाँ का उद्गम स्रोत है. Spiritual desire. आध्यात्मिक इच्छाएं का. And like the heart kind of represents like attachment, हृदय आसक्ति को भी दर्शाता है. So इसका प्रतीक भी है. So the heart could be the place of other desires that we attach to. हृदय वो स्थान हो सकता है ऐसी इच्छाओं का जिनसे हम बहुत आसक्त हो सकते हैं. So surrendering our heart in the deepest way means at some point in time, even if we're not able to in this moment, asking Krishna, help me to surrender my lesser desires for your desire for me. और अपना हृदय जो सबसे गहराई है वहां से अपने हृदय को भगवान कृष्ण को देना, उनको शरणागत होना. ये हालांकि इस समय हमारी निम्न कोटि की इच्छाएं प्रस्तुत हो सकती हैं, अभी उसमें हो सकते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण को ये प्रार्थना करना कि हमारी सहायता करें इस कार्य को करने के लिए. And this process of surrender can't be faked, it can't be done artificially, and it can't be done, it's done organically, it's done in reality. जो शरणागति की विधि है इसको कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता. इसको वास्तविकता में किया जाता है और ये कदम बाय कदम पे बढ़ती है और ये एक वास्तविकता है. Because it's not about an external surrender. क्योंकि ये बाह्य शरणागति से संबंधित नहीं है. It's about an internal surrender. ये आंतरिक शरणागति से संबंधित है. It's easy enough for us to surrender externally and look good. बाह्य रूप से शरणागत होना और अच्छा दिखना बहुत सरल है. Can we examine all those things hidden inside and one by one, little by little, surrender those? क्या हम जो हमारे हृदय के अंदर चीजें उपस्थित हैं उनका निरीक्षण कर सकते हैं और एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके हम उसको समर्पित करें. These are the surrenders that maybe no one even sees. और ये ऐसी चीजें समर्पित करते हैं जिसने शायद कोई भी नहीं देखेगा. But they are the deepest surrender. परंतु ये सबसे गहरा शरणागति है. And as we little by little let go of those things which keep us here in this material world, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस एक एक चीज को छोड़ दें जो हमें यहाँ भौतिक संसार में बांधे रखती है, we have more space and more strength to hold on to Guru and Krishna's lotus feet. तब हमारे हृदय में ज्यादा जगह होगी और ज्यादा शक्ति होगी जिससे मैं गुरु और कृष्ण के चरण कमलों को अच्छे से पकड़ के रख सकता हूँ. And develop our love and attachment for them. और अपना प्रेम और आसक्ति उनके प्रति विकसित कर सकते हैं.
So just as Krishna came here as a dwarf, a Brahmin dwarf boy, to trick Bali Maharaj, जैसे भगवान कृष्ण वामन रूप में यहाँ पर आए बलि महाराज को धोखा देने के लिए, Krishna will also come to trick us. भगवान कृष्ण हमें भी ठगने आएंगे and ask us for our heart. और हमसे हमारे हृदय की मांग करेंगे. So we can ask ourselves, am I ready? And am I ready to give? What can I give today? What can I give today? What can I give up today? And how can I pray for love? तो मैं अपने आप से पूछ सकता हूँ कि आज वर्तमान में, आज के दिन में क्या दे सकता हूँ, क्या समर्पित कर सकता हूँ, और कैसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ इस चीज के लिए, प्रेम के लिए. Letting go and giving up something, surrendering something for Krishna, it can be a daily or even a moment by moment process. जाने देना, भगवान कृष्ण को समर्पित करना, ये एक नैतिक कार्य हो सकता है प्रतिदिन का, या हर क्षण इस कार्य को किया जा सकता है. In this moment when I'm feeling maybe some frustration or disturbance with a god brother or god sister, is there something I can give up right now so that I can connect in love to this person and let go of a piece of my false ego that keeps me here? अगर मैं बहुत ही परेशान हूँ या निराश हूँ अपने गुरु भाई या गुरु बहन के संबंधों के कारण, तो इस समय कोई एक ऐसी चीज है मेरे अंदर जिसको मैं जाने दे सकता हूँ, एक टुकड़ा झूठे अहंकार का, जिससे मैं उस व्यक्ति के साथ प्रेम में संबंध बना सकूं. It's a daily practice. ये एक अभ्यास है जो प्रतिदिन किया जाता है. And it gives us the opportunity to honestly open our heart and allow Krishna. और हमें ये एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें हम ईमानदारी के साथ अपने हृदय को खोल सकते हैं और भगवान कृष्ण to claim our heart. भगवान कृष्ण को उसमें प्रवेश के लिए मार्ग बना सकते हैं. So, if anybody has any other insights or realizations, corrections, or questions in this verse, I'm open to hearing. तो अगर आप में से किसी का कोई और साक्षात्कार, टिप्पणी, करेक्शंस या कुछ भी आप चाहें तो मैं होगा. Thank you, Mataji. Says surrender means giving up our lower desires gradually, one by one. But on my own, it's very difficult to give up my own desire. I need some external help. And even to seek help, a lot of strength is required. What's required? Even to seek help from someone to help me to give up my desires, it requires a lot of strength. And normally I don't have that strength, so how to muster that strength? Well, strength is developed. It doesn't come like a injecting with strength. It's like you exercise a muscle, you know, and the first time you exercise it, oh, I can't lift this, okay. I can lift this, now I can lift it, now I can lift it, now I can lift it, now I can lift it this high. It's exercise, practice.
प्रभु जी का प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि एक एक करके अंदर से जो झूठे अहंकार के एक टुकड़ा है उसको छोड़ना, उसको त्यागना, परंतु इसके लिए मुझे अपने आप से करने की शक्ति नहीं है और बाहर से मेरे को इसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है और सहायता मांगने के लिए भी बहुत शक्ति की आवश्यकता है। तो अगर वो शक्ति ना हो तो क्या किया जा सके? तो माता जी ने उत्तर दिया कि जो शक्ति है वो उसका विकास किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई बाहर से एक ऑब्जेक्ट है शक्ति तुरंत आपको ला के दे दी जाएगी। धीरे 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 करके अभ्यास से उसको विकसित किया जाता है। So the first step is declaring, I want to start exercising. तो जो पहला कदम है इस बात की घोषणा करना कि हाँ मैं अब व्यायाम अभ्यास करना चाहता हूँ। And the second step is just in merely recognizing whenever we're upset, frustrated, whenever we feel stuck and we can't say anything, whenever we're just, we don't feel like we have any power, that means we're hiding something. There's something that has a grasp on us that we're not seeing. और दूसरा कदम ये है कि जब भी हम कभी अपसेट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, कुंठित हो या कुछ बोलना चाह रहे बोल नहीं पा रहे, तो इस बात को पहचानना कि हमारे अंदर हम किसी ना किसी चीज को छुपाए रखे हैं जिसने हमारे ऊपर अपना पूरा पंजा धसा हुआ है। So to say in that moment, I'm not connected here to my deepest self. Something is going on here. Just that recognition gives enough space for you to do some self-examination in that moment. और उस समय इस बात को पहचानना कि मैं अपने हृदय के अंतःकरण से अभी संबंधित नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ चल रहा है। अगर इस बात को पहचानना से ही हमें वो जगह मिल जाती है जिससे हम आत्मलोकन कर सकें, आत्मनिरीक्षण कर सकें। So some feeling, some need, some mental story or belief is interfering with me being able to perceive the absolute truth right now. कुछ ना कुछ फीलिंग्स, कुछ ना कुछ नीड्स, आवश्यकता है या कुछ ना कुछ मानसिक स्तर पे कहानी बनाई है या कोई बिलीफ वो बीच में आ रहा है परम सत्य को देखने के, परम सत्य से संबंधित होने के रास्ते में। And a support system is always good, absolutely. और एक सपोर्ट सिस्टम, एक ऐसा सहायक विधि प्रणाली वो बहुत अच्छी है। If we want to take on an exercise program or a diet program, it's nice to have partners who are doing that with us so that, we have some encouragement and support. अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो अगर ऐसा हमें कोई साथी मिल जाए जो भी वही व्यायाम और या वही डाइट ले रहा है, तो इससे बहुत शक्ति मिलती है, कुछ प्रोत्साहन मिलता है। And I think that's what the temple life and the ashrams are about, creating that support system. और मैं समझती हूँ कि जो आश्रम या जो मंदिर है ये इसी के लिए है, सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। So there's always new ways that we can create support, and how can we create, if we see that some support is missing, how can we create that support that we see is needed? और ये सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रोचक तरीके हो सकते हैं। जब भी आवश्यकता देखो तो क्या सपोर्ट सिस्टम उस आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। And pray to Krishna and he will give you the intelligence how to create what it is that you need. और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें और वो आपको बुद्धि देंगे उस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण करने के लिए। Okay, answer. So
So there's a question here, and then there's a question here, and like this. Thank you, Maharaj. It was very insightful. And yes, of course, it's insightful. It's an honest appreciation. So, just needed a clarification. As you mentioned, from within the heart, there's so many things, and the surrender is like internal. When you take out one after another, and you like one after another, you offer, it's just like a flower offering we do to Krishna, right? Now when the flower offering is done, it's like more tangible. Yes. And what you're doing is saying it's like it's like more ethereal. It's subtle, very subtle. Yeah. So then, like, I mean, how like it because it is subtle. Mm-hmm. So it becomes very difficult to do it in a systematic way that like you have some sort of regularity, because it is not spontaneous. It's like abrupt. Sometimes you are in a good mood, you can fix your mind, you are positive about Krishna consciousness, you actually can see Krishna as your friend, so you want to do that. Yes. Sometimes things are not so favorable, you just don't want to do it. Right. And like how to get past that. I mean, I understand how to get past it, how to do that. Okay. So when things are subtle, they're invisible, right? And how do you deal with an invisible thing? How do you do it? प्रभु जी का प्रश्न था, जैसे आपने बताया, हृदय से एक एक करके चीज को समर्पित करना भगवान कृष्ण के प्रति, और अंदर जैसे हम एक फूल अर्पित करते हैं तो ये कुछ ऐसी वस्तु है जिसको मैं छू सकता हूँ, दे सकता हूँ, परंतु यहाँ बात हो रही है सूक्ष्म स्तर की, जिसको कभी मेरा मूड अच्छा होगा तो मैंने कर लिया, कभी नहीं हुआ, एक सिस्टमेटिक वे इसका नहीं है। तो इस चीज को कैसे डील करें सूक्ष्म स्तर पे, जिस चीज को मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, उसको भगवान को देना। You make it visible. Make it visible. So you make it visible by giving it names or recognizing. So what am I telling myself right now? I'm really upset. I'm really disturbed. What am I telling myself? I'm telling myself that this person is blah, 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 blah. So as soon as you find you're pointing the finger out here, that's definitely not the answer. That's the left brain wanting to blame. So, okay, so I'm saying that blah, 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 he, she, they are, da, 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 da. So, okay, that's a pretense. Anything that's happening out here is a pretense. So what is that hiding about me? That's hiding that I don't like what they said to me. I don't like the tone of voice they used to me. I felt hurt. It's hiding that I need respect. It's hiding that I felt. You just start hearing and naming and putting words to what's actually going on in that moment right there. There are very real thoughts going through your head. If you stop right now and just say, what am I thinking right now? In this moment, you're thinking something. Right now, what are you thinking? I don't know. What's she talking about? That's what you're thinking. It could just be as simple as what she's talking about. It's like you're thinking something. So if you can kind of like see it and put a name to it or put words to it, it becomes visible. And then you're like, then you can look at it and deal with it. Because it has a little substance to it. And then with that substance, you can say, okay, that's an interesting thought. Do I want to believe that thought, that this person is blah, 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 blah? Well, they're not always like that, and that's not the absolute truth. And, what's going on inside of me? And then you just contend with it in that moment. So those moments when things aren't going like smoothly, where we can't just think of Krishna, those are the moments where we need to exercise. Those are the moments of truth where we exercise. When everything's going smoothly, okay, I'm thinking of Krishna, this is great. But when we hit against something and we're stuck or we're stopped or we're upset, that's where you make the progress, because that's what you still have to work on. Does that make sense? How fast can I get back to the
I trust? In that moment, you mean? It depends on how much work you do, but if you do enough work, you could do it in a second. So I'll just give you a quick example. I had a story. I'm sorry. तो माता जी ने उत्तर दिया कि अदृश्य चीजें जो सूक्ष्म स्तर पर हैं, उनसे कैसे हम डील कर सकते हैं अगर हम उन अदृश्य चीजों को दृश्यमान बना दें। कैसे? उनको एक शब्द देके कि इस समय वर्तमान में मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, कि वो व्यक्ति क्या क्या है, कुछ ना कुछ विचार। अगर हम उसको स्पेसिफाई कर दें, उसको हम शब्द दे दें, तो कुछ आपके सामने सब्सटेंस है जिससे आप डील कर सकते हो। Okay, so I'll just give you a quick example. So it takes some time because you're working on things, but so when you get in touch with some belief system that you have inside of your head, you know, like I had a story that I was unloved and unlovable. So I contended with that. I talked to my mother, I talked to my brother, I told them that I had made up a story. I took responsibility that I made up the story when I was really little, and I took responsibility that I was living my life as if that were actually true. And so then I started to recognize the voice of that story. Oh, poor baby, all that. And so even one time someone said something to me and I started crying because, you know, I was like feeling hurt. And all of a sudden I heard, no wait, that's the story, I'm not loved. In that second, I just put it aside, the tears went right up back in my face and the person said, what? Because I was like ready to full on, you know, burst into tears and cry. And I was like, oh, and then I'm like, oh, no, I'm fine. I was like, what? So it takes a second, but it takes, you know, the recognition of what you're buying into in that moment that has you going down that drain. So and you recognize what you recognize. So you'll recognize it in pieces. So you recognize this piece, and then you put this piece over here, then you recognize this piece, and it's like finding pieces to the puzzle. And then you start understanding yourself like, oh yeah, that's why I do that all the time. Why do I do that? Oh yeah, that's why I do that. And can I choose to do something else? Yeah. But if you don't even know that you're doing it, how are you going to change it? Because you don't even know you're doing it. Like, I know that I get excited sometimes and I raise my voice, you know, so I have to like recognize, okay, am I raising my voice? I get excited, like, can I speak a little softer? So, like, just like that. So I wanted to honor his question back there because he had raised his hand. तो उदाहरण के लिए मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने अपने जीवन में ये कहानी बनाई हुई थी अपने बारे में कि मुझे कोई प्रेम नहीं कर सकता और मुझे आज तक कोई जीवन में प्रेम नहीं मिला। और मैं इस विचारधारा के साथ, बहुत सूक्ष्म स्तर पर था, इस विचारधारा के साथ मैं अपना जीवन जीती थी। और फिर मैंने इस चीज़ को पहचाना, अपने भाई से, अपनी माता से मैंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया, मैंने इसकी जिम्मेदारी ली इस कहानी की। और फिर एक बार हुआ कि एक व्यक्ति आया और उसने मेरे को जैसे ही कुछ कहा कि मैं तुरंत वैसे रोने लगी, मेरे आंसू आधे यहाँ तक पहुँच चुके थे। परंतु फिर उसी एक क्षण के अंदर मैंने पहचाना कि मैं उसी कहानी के अंदर अपने आप को वापस में ढकेल रही हूँ। जैसे ही मैंने पहचाना, उसी क्षण मेरे आंसू वापस ऊपर चले गए और वो व्यक्ति भी हैरान रह गया कि क्या हुआ। तो आप एक क्षण में कर सकते हैं। मुख्य बात ये है उस चीज़ को पहचानना, और टुकड़ों टुकड़ों में वो चीज़ पहचानी जाती है। पहले एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, जैसे एक जिगसॉ पजल होता है, और फिर आप उस चीज़ों से फैमिलियर हो जाते हैं। हाँ, मैं इस परिस्थिति में ऐसा कार्य करता हूँ, ऐसा रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो क्या मैं किसी और तरीके से ये चुनाव कर सकता हूँ कि किसी और तरीके से मैं इस परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करूँ। परंतु अगर आप पहचानते ही नहीं हैं तो आप उसको चीज़ को बदलेंगे कैसे? So, and a good way to do that is by asking yourself questions. What am I pretending? What am I telling myself right now? And that way you can use your mind. Your mind can actually help you. You ask your mind, what is going on here? You know, what am I telling myself? What am I saying? I can give you, some more hints on that, but it's really about asking questions like, what's going on here? Oh, what am I making this mean? What am I telling myself?
और एक अच्छा तरीका है इस चीज को करने का कि अगर हम अपने आप से कुछ प्रश्न पूछें, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछें कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे मन में चल रही है, ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब हम इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं तो मन देखेंगे आपकी सहायता करेगा। So there's one question right there. हरे कृष्ण माता जी, ये नवता भक्ति में 8 काम तो लगभग सभी डिवोटी कर जाते हैं, अर्चनम बदलम, लेकिन जब आत्मनिवेदन का काम आता है, बड़ी महाराज जैसे किया, वो काम नहीं हो पाता। मैं भी इसका एक शिकार रहा हूँ। हमारा इस मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, उस मंदिर से मेरे से किसी ने पूछा कि आपका मकान खाली है, कुछ समय के लिए हमारे गेस्ट आए, दे दोगे? मैं तुरंत अपने बोला मैं मेरी वाइफ से पूछूंगा। मतलब वहां पर आत्मनिवेदन नहीं हो पाया, जबकि मैं बहुत लंबे समय से इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद भी आज तक मेरे से आत्मनिवेदन नहीं हुआ है, तो बड़ी महाराज का हुआ। तो ये नवता भक्ति में 8 भक्ति तो हम लगभग पूरी कर जाते हैं। He's saying that we are able to completely do first 8 processes of devotional service, but Atmanivedana, and he's giving an example. When this temple was moved from to another place, so devotees asked whether we can use your house for keeping guests in there. So immediately said, I said no, I'll ask my wife first. So it's very difficult to get to the point of Atmanivedana as Bali Maharaj did here. Well, you only have to get to it one moment at a time. And if you do have a wife, that's part of surrender. I mean, you have to surrender to you're living with your wife, you have to consider her feelings. That is part of surrender. At that point in time, surrendering to what your wife's desires are is included in surrender because she's part of your life at that point in time. So you surrender what you can according to your circumstances, and then you surrender the next thing, and then you surrender what you can. It's not like surrender looks like only one thing, like total renunciation. Somebody could, surrender is more like surrendering to what your wife wants. That's a bigger surrender, right? You could have more easily, that's a bigger surrender, right? Go ahead. Take something. Okay, so माता जी कह रहे हैं कि जो आत्मनिवेदन है वो प्रति क्षण इसका अभ्यास किया जाता है, और उस समय आपने अगर अपनी पत्नी के विषय में सोचा, क्योंकि वो भी आपके जीवन का अंग है, तो ये भी शरणागति की विधि के अंदर ही आता है। शरणागति की विधि ऐसी नहीं है कि आप अकेले ने जो सब कुछ त्याग दिया, उसी तरीके से उस समय आपने अपनी जो पत्नी है उनकी भावनाओं की कद्र की और उनके प्रति शरणागति की, तो ये भी एक बड़ी शरणागति है। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? So give up the conception that surrender only looks one way. Give up the conception that surrender looks like I give up my whole family life and I wear saffron, and give up that conception of surrender. Surrender is like so much deeper and so much more subtle, surrendering to your children, your wife, like surrendering to all the things that are coming in your life. And at the same time, maintaining a balance, that takes something. इस धारणा को अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि शरणागति का अर्थ है सब कुछ अपना त्याग देना, अपने घर वालों परिवार वालों को त्याग के भगवत वस्त्र धारण कर लेना, ये शरणागति है। इस धारणा को अपने मन के अंतःकरण से निकाल फेंक डालिए, क्योंकि जो शरणागति है ये इससे कहीं गहरा है और कहीं ज़्यादा सूक्ष्म है। इसका अर्थ एक महीने में ये है कि आपके जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, आपके बच्चे, आपके पत्नी, इन सब के प्रति भी शरणागत होना और एक अपने जीवन में संतुलन बनाना। उस संतुलन बनाने के लिए बहुत शक्ति लगती है, कुछ उसके लिए चाहिए संतुलन बनाने के लिए, और ये शरणागति की विधि है। I just wanted to pay attention to the time. It's 8 minutes after 9. And do any ladies have any questions?
because if you do, you're not asking them. And if you want, maybe you can ask me later, but you want to ask a question? I want to give one lady that. Balance is a very big thing. How can we create balance in our life? Balance is something you have to practice every day. It's not just like you get balance and then I'm balanced. It's not like you get pure devotion and then you're a pure devotee. It's like you keep in the process. It's not like, okay, I did it, I'm done. Did the gopis stop loving Krishna? No, it's an ongoing thing, you know. So you keep practicing and you say, oh, I said yes to too many things and now I'm tipping the scales and I'm getting really angry. So it's a daily practice, balance. जो संतुलन बनाना है वो प्रतिदिन का अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने बाहर से संतुलन ला के दिया और बस का तावा संतुलन हो गया। ये उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध भक्ति मिल गई, हाँ अब मैंने शुद्ध भक्ति कर ली तो क्या आप कृष्ण को प्रेम करना बंद कर दोगे? नहीं। तो प्रतिदिन का ये बैलेंस है कि किसी दिन आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को हाँ कर दी है और अब मैं बहुत अंदर से गुस्सा मेरा बढ़ता जा रहा है, तो फिर दूसरी तरफ ये तो प्रतिदिन का अभ्यास है। If you ever ride a bike, balance means you're keeping the pedals moving. If you stop moving the pedals, अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आपको पैडल निरंतर चलाते रहना पड़ेगा। ऐसा अगर आपने पैडल चलाना बंद कर दिया तो साइकिल एक तरफ गिर जाएगी। Okay. So I wanted to honor the time constraint. So do you want to ask for your question later, or is it? I just want to say that Prabhuji का प्रश्न बहुत बढ़िया था, आपका उत्तर भी उतना ही अच्छा था। और बैलेंस के बारे में मैं पिछले 30 साल से last 20 years I'm coming to this temple. कुछ हफ्ते कुछ महीने आता हूँ, फिर घर में वहाँ पे फिर छूट जाता है, फिर आता हूँ, then again. So I'm still trying to make the balance. Is saying that Prabhuji's questions were very good and your reply was also very fine. And Mataji is talking about balance. He's telling about his personal life. Yeah. That is coming to this temple from past 20 years. And 29 years. And he comes for a few months, then spends some time in home. He's still, even today, trying to maintain that balance. And the thing is to just keep trying. We're the little sparrow and we keep trying and we keep trying and we keep trying and we keep trying and we don't stop pedaling, we don't stop swimming upstream, and then, Krishna helps us. And we're practicing and exercising our muscles in the meantime. We're exercising our leg muscles when balancing, we're exercising our arms when we're swimming upstream, and yeah. Thank you so much for your time and your attention. All glories to Srimad Bhagavatam.